Thank you, sir. You have seen in this video. Use your chat box. The most common. Thank you. Very good, Hamna. Kindness is there. Very good. The most important word each and every person used after getting help. Yes, well done. This is the thought of the day. Thank you. Each and every person provided the help, provided the assistance, and the word thank you was used. Was it good? Thumbs up for that one if you like that one. Cheer up, hurry up. Oh, it's amazing. Thank you, darling. Thank you. I'm happy. I'm happy. अभी इस पे नहीं आएंगे सर, इसको रहने दें ऐसे ही. Just leave this one first screen, but let me finish the previous one. Now I will come back. I'm happy that you have cheered up, and this is the old name of Baghe Chunav was Lawrence Garden. To give honor, to remember the services of God, it is named as Baghe Chunav. Now, most of the students might have got the answer of the question that Iqbal was our national poet. The Minto Park was named after the Lord Minto Gilbert. He was the Governor General, ninth Governor General in 1807 till 1813. Before 1857, I told you, the title was given Governor General to the person who was managing the East India Company, trading company in the subcontinent. Now, I'm telling you this story, so just take it as a story. So, the Minto Park was famous for what? Hosting All India Muslim League gathering 23rd March 1940. Pakistan resolution was passed. So it was called Minto Park during the British time. And to give honor to the services of our poet, it was changed to Iqbal Park. Hopefully I'm clear to this one now. We honor and this one. Like for example, Lalpur was the name of Faisalabad. I was born in Faisalabad. Earlier it was named Lalpur. To honor and to give respect and to show the love to Shah Faisal, the King Shah Faisal of Saudi, it is named Faisalabad. Name is after Shah Faisal, the King of Saudi Arabia. So it was named after that, and he gave lots of financial support to bring good changes in Faisalabad. So it is the name. So we honor and respect, show our respect to the person. Am I clear? Okay. Do you have any question now? Any? Is it okay? Clear? Better if it is clear. Okay. No. Now shall we go to the new lesson? Before I say to turn on your books, I would like to inform you, beta, in your new books, thank you, beta, thank you for quick response. In your new books, your question is the early problems of Pakistan. Now, before I start, just after the role of Qaid-e-Azam in the creation of Pakistan, the topic is given, the next topic is the consolidation of the states. So before I start, just see the picture. What did you see in the picture? Just zoom the picture. Sir, second picture, just watch it. There are three pictures you are going to see. Okay, this is train to Pakistan. Okay, the next picture. They're traveling together. Okay. What do you see in this picture? This is the black and white picture, not colored one. Now, can you see a big mob? Unity. Okay. Now come back to the first picture. Remember these three pictures. What do you see in the picture? People are walking. Kolayan. Okay. People are walking. What are they carrying? Their little belongings. Can you see? Luggage. Very good. Are they traveling by bus or truck? Traveling with their belongings. Well done. Very good answer. With their luggage. Oh, very good, Masab. Masab got the point. On foot. Carts.
There is no concept of bus, no concept of walking. They are on foot. Wonderful. Now you are coming to the topic. Yes, Zaru. Well done. Sir, second picture दीजिएगा. Just please change the second picture of the train. Look at this one. Train to Pakistan. It means people are migrating from India to Pakistan. This is the picture depicting that my picture of migration, the partition. And so next picture also with the cart, the third one. Look at this picture. You very well said with the cart. You have not seen any bus, any truck. They are on foot. They are in a miserable condition. Now you just tell me, what was the condition you are watching? A good condition, miserable, or what? Sir, first picture लीजिएगा. Yes, all in a bad condition. Sir, first picture लीजिएगा. Yes. Now look at the scene, beautifully depicted. What is the weather? It's cloudy. It might going to rain. They are poor, very good. They are not taking their landforms, whatsoever they had before partition in India, whatsoever they were having. They were owner of maybe the farmlands, maybe the big houses. Now they are not carrying very good, miserable. Train is overcrowded. Now this is the situation when partition was announced. Those who wanted to join Pakistan, they were in this state. Now they don't have the house. They don't have their buildings. They don't have their farmlands. Whatsoever, yes, they were poor now. Right now they are really poor. And who welcomed them? Who welcomed them? When 14th August 1947, last time we read, 1947, Pakistan, Qaed welcomed them. The Muslim officers, very good. Well done. Pakistani people, those who were in these states, Northwestern Frontier Province, Sindh, Balochistan, और these are the people जिस border से भी वो enter हुए, Lahore border से enter हुए, from Sindh enter हुए, they were welcomed by the people staying here. ये miserable, they were in miserable condition. अब उस अफरा तफरी के आलम में उनके पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना चारपाइयां है, ना मेडिसिन है, कोई स्कूल नहीं है, कोई फूड नहीं है. दे आर कैरिंग लिटिल बिलोंगिंग्स. तो वो किस कंडीशन में पाकिस्तान में एंटर हुए? इन अ मिजरेबल कंडीशन. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पेज नंबर 92. Consolidation of the state. जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच. Topic is consolidation of the state and search for constitution. उर्दू में इसका तर्जमा है, those who are studying in उर्दू, रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी. जो आपकी नई बुक्स हैं उसमें आइन की तैयारी 1947 till 56 दिया गया है. इसको अभी डेट चेंज कर ले. कंसोलिडेशन का मतलब है यकजा करना, मुस्तहकम करना. उर्दू में इसका तर्जमा बन रहा है इस पूरे जुमले का, रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी. नाउ रियासत का इस्तेहकाम मीन्स to joining all the 4 units. What were the 4 units? 4 provinces, Sindh, Punjab, Balochistan, और सरहद को जोड़ने की तैयारी थी, कंसोलिडेट करना, उनको इकट्ठा करना. अब उनको इकट्ठा कैसे करना था? There they need a little laws. उनके लिए law, कानून और कोई constitution was required. So on page number 92, take your pencils in your hands. Hurry up, hurry up. Take your pencils in your hands, beta, because important things you are going to underline or circle. And remember, when I say underline, circle, it is going to help you to learn your MCQs and short questions. Hopefully, I'm clear regarding to this thing. Okay, ready? When the days of freedom was approaching near, जब क्या था? आजादी के दिन करीब आ रहे थे. The Constituent Assembly elected Quaid-e-Azam president on August 11, 1947. Please circle कीजिएगा. Constituent Assembly का मतलब है कानून साज असेंबली. जैसे आपकी नेशनल असेंबली है, they draw the laws और फिर वो laws जो हैं वो implement होते हैं. It's a big procedure जो आपको ऐसे ऐसे समझाया जाएगा.
वो आगे सेनेट पे, फिर सेनेट में आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं सदर को, और फिर सदर उनको अप्रूव करके सिग्नेचर्स करते हैं, और वो बहस के बाद आफ्टर अ गुड डिबेट इन नेशनल असेंबली, good debate in the Senate, upper house, and then it is signed by the approved by the प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, और फिर वो कानून जो है वो पूरे पाकिस्तान में लागू हो जाते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने अभी बताया है कानून साज असेंबली, जो आपके कवानीन मुल्क को फराहम करती है और उसके लिए डिसाइड करती है. व्हाट वाज द डेट? सर्कल August 11, 1947. Very important things are there, so be conscious now. Chief Justice Sir Abdul Rashid took oath. Who took oath? Oath means half liya. Who took oath from Qaid? Chief Justice. Chief Justice Sir Abdul Rashid ने कायद से oath लिया. Oath for what? half किसके लिया? The as a president. ठीक है? The Constituent Assembly consisted of 69 members. My dear students, remember 1945-46 last time I told you elections were held. Muslims got in majority, और जो मुसलमान वहां पर selected थे वही लोग जो थे इन्होंने इस कानून साज असेंबली जब 1947 को 14 अगस्त पे ये अनाउंस हुआ तो एंड फिर ग्रेजुअली और का एडिशन हुआ और उसमें 69 10 मेंबर्स को ऐड किया गया एंड इट चेंज इनटू लेटर ऑन 679. 3-4 थिंग्स. चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद नेम सर्कल कीजिएगा. took oath from Qaid. 69 members were in the first part, and then 10 members added, and then 79. It changed into the 79. Thank you, beta. Maulvi Tamizuddin was appointed as the first speaker of the assembly. हर असेंबली को पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और सूबाई असेंबलियों के अलावा मेन स्पीकर जो है वो आपका कौमी असेंबली में बैठते हैं, जो कि तमाम कार्रवाई को जितनी भी उसमें बहस होती है उसको वो मॉनिटर करते हैं. So, इसी तरह Maulvi Tamizuddin was appointed as the first speaker of the assembly. Short question, it can be a short question. Who was the first speaker of the assembly? Constituent Assembly, Maulvi Tamizuddin. So, he was the first speaker. A provisional constitution. Provisional means आरसी. Temporary कानून जो था, आइन जो था, provisional constitution का मतलब है आरसी आइन. Temporary आइन जो बना was adopted with some modifications in Indian Act of 1935. What do you mean by modification? A little change. कुछ उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई. किस चीज में तब्दीली की? In Indian Act of 1935. इंडियन एक्ट ऑफ 1935 के तहत सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत चल रही थी. उसी कानून को, उसी एक्ट को इसमें अपनी पाकिस्तान ने अपनी कानून साज असेंबली का हिस्सा बनाया and they brought a little change in that. It was modified until the new constitution was introduced. जब तक कि नया आइन नहीं बनता तो स्पीकर ने और कायदे-आज़म ने और बाकी मेंबरान ने ये फैसला किया कि वी आर गोइंग टू फॉलो द इंडियन एक्ट 1935. फेडरल सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन द कंट्री. उर्दू में फेडरल सिस्टम को वफाकी निज़ाम, और इसका तर्जुमा जो उर्दू की बुक्स में है वफाकी निज़ाम राइट किया गया. व्हाट इज वफाकी निज़ाम? वफाक का मतलब सेंटर. एक सेंट्रल असेंबली है, लाइक राइट नाउ नेशनल असेंबली है, एंड ऑल द 5 प्रोविंसेस आर द पार्ट ऑफ दैट वन. जो भी कानून होता है वो उसको फॉलो करते हैं. जो भी कवानीन होते हैं, जो भी नया कानून बनता है नेशनल असेंबली से पास होकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों में की जाती है. दो दे हैव बीन गिवन लिटिल ऑटोनॉमी बट दे आर द पार्ट. वो सेंटर में आपका वफाक होता है नेशनल असेंबली, और उसके इर्द गिर्द ऑल द सूबाई असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज दे फॉलो. सो अब आपको समझ आ गई व्हाट इज फेडरल सिस्टम. इट वाज लॉन्च्ड under provisional constitution. Now provisional constitution मैंने अभी last time बताया अभी पीछे is a temporary constitution RCI. The Constituent Assembly that also had the role of central parliament was summoned. Summoned means called together हुई for the first session. पहले सेशन के लिए जो सेंट्रल असेंबली थी वो इकट्ठी हुई ताकि जो है उसके ऊपर
बहस मुबासा या एक आइन को हम अडॉप्ट कर सके और मुल्क को कैसे चलाना है, how to run the government in the country. They summoned together, the session was called together, all those 79 people sat there, और उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस थी वो की गई. Summon means बेटा together या कॉल करना, और to appear in a specified place, किसी एक जगह मिलकर इकट्ठे किया जाए. All were gathered here and there. लेकिन जैसे नेशनल असेंबली का होता है तो पंजाब से भी मेंबर्स जाते हैं, सिंध से भी मेंबर्स जाते हैं, सरहद से भी, गिलगित बल्तिस्तान से, फेडरल एरिया से भी, दे ऑल पार्टिसिपेट इन द नेशनल असेंबली. तो उसको हम सेंट्रल असेंबली कहते हैं, जिसमें सारे सूबों से मुंतखब रुकन जो होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट वन. क्लियर? I have got 2 minutes, so I will read the first problem, early problems of Pakistan, unjust division of Redcliffe. Unjust division of Redcliffe जो थे, उनको ये लॉ के सर सेकंड पेज लीजिएगा, सेकंड स्लाइड लीजिएगा. अर्ली प्रॉब्लम्स, इब्तदाई मुश्किलात में जो अभी हमने सिचुएशन देखी थी, उनमें से एक सिचुएशन थी अनजस्ट डिवीजन. सूबों के अंदर से जो एरियाज थे, मुस्लिम मानों से भरपूर अक्सरियत वाले एरियाज जो थे, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, दे वर गिवन टू द इंडिया. अब उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ 3 June 1947, it was decided that the Punjab and Bengal will be divided into Muslim and non-Muslim majority areas. किसके तहत? 3 जून के प्लान के तहत. पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी. प्लीज सर्कल कीजिएगा. रिमेंबर, बंगाल जो था वो 1905 में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए 1905 में उसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में हिंदू थे और वेस्ट बंगाल में मुसलमान थे. तो द डिवीजन, द पार्टीशन वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905. लेकिन हिंदुओं ने इसको पसंद नहीं किया था और फिर उसको दोबारा एक सूबा करार दिया गया 1911 में. So you will that remember that Punjab or Bengal were having lots of, majority of the Muslims. Muslim majority areas would become parts of Pakistan, whereas the remaining areas would be included in India. अब उन्होंने कहा पंजाब और बंगाल के सूबे, जो बड़े सूबे थे, जो मुसलमानों से अक्सरियत वाले इलाके, उन्हें मुसलमानों में पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा, और जो हिंदुओं से अक्सरियत वाले इलाके, इन सूबों में से वो हिंदुओं को इंडिया के साथ जोड़ दिया जाएगा. Now what happened? It was agreed that a boundary commission should be constituted. Boundary commission means हदबंदी के लिए, सरहदबंदी के लिए करने के लिए एक कमीशन, कुछ अफराद पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाएगा. To be constituted का मतलब है इनको तश्कील दिया गया, मुरत्तब किया गया. And it's arbitration. Arbitration का मतलब है सालसी. To make a judgment, फैसला करना. Should be constituted and its arbitration should be abided by the parties. जो भी डिवीजन होगी, arbitration judgment दी जाएगी बाउंड्री कमीशन की तरफ से. I'm telling you in Urdu now to make the things clear. जो भी arbitration यानी judgment फैसला किया जाएगा, वो दोनों parties, what are the two parties? Indians and Muslims. Muslim League and Congress will accept that one, abided by. उसके ऊपर वो उसके ऊपर उसको सॉरी उसके ऊपर जो है वो दोनों जो है वो मुत्तफिका तौर पर अमल करेंगे. इट विल बी अबाइडेड बाय द पार्टीज, यानी वो दोनों उस पर अमल करेंगे. नाउ हु वाज द बाउंड्री इन चार्ज फॉर द बाउंड्री कमीशन? राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दैट वन. नेम सर रेडक्लिफ. हु वाज द इन चार्ज फॉर बाउंड्री कमीशन? Lord Mountbatten was there as a viceroy. लेकिन हर काम Lord Mountbatten is not going to do. तो उसने एक commission बना दिया. What is that? And Sir Redcliffe was in charge of that commission. Commission of what? Commission of what? Boundary Commission. So who was in charge for the Boundary Commission? Sir Redcliffe, an English law expert. English law expert का मतलब क्या है? एक lawyer था. एक lawyer था. Is that clear? So who was in charge? Answer will be Sir Redcliffe. It can be the short question. Who was Sir Redcliffe? An English law expert was assigned this responsibility. What responsibility? To do the division of the boundary, to do the division of the areas. Sir Redcliffe influenced and manipulated by Lord Mountbatten. Now, two difficult words are there. Influence means effect. किसका effect था? असर सू था
लॉर्ड माउंटबेटन के असर सू। मैन्युपुलेटेड मीन्स कंट्रोल किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया, उनके ऊपर असर था। बोथ आर द हैविंग द सेम मीनिंग, इन्फ्लुएंस एंड मैन्युपुलेटेड। किसके ऊपर असर सू था, कौन मुतासिर थे, किसके अंडर कंट्रोल थे रेडक्लिफ? बाय लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ वंस अगेन लिसन केयरफुली। सर रेडक्लिफ influenced and manipulated by Lord Mountbatten made unjust, unjust का मतलब है गैर मुनसिफाना, जो उर्दू में बच्चे पढ़े। Okay, who was the in charge of the boundary commission? Sir Redcliffe. Again I will tell you, Redcliffe was influenced and manipulated. Manipulated means जिसके ऊपर बहुत असर हो, किसी के अंडर हो, किसी के कंट्रोल में हो। Influence means effect, किसी का असर सू बहुत ज्यादा। So who was under the influence of what person? Redcliffe was under the influence of Lord Mountbatten. Made unjust and unfair partitions. इसको यहीं तक रोक लें, इसको यहीं तक रोक लें बेटा, इसको यहीं तक रोक लें। It's 1:30. Somebody has turned on the mic. मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी. It is the time for your physics chapter. Up till date here, beta, put a date. Hope things are clear to you. Any question? I'm going to stop it here. Today is 13. Put a date 13/5. No. Very good. I'm happy. No issue.